एक एग्जाम्पल राजा हरिश्चंद्र है। राजा हरिश्चंद्र को देखा होगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्योंकि हमारा जस्टिस जो है ना वो सत्य, अहिंसा, नैतिकता, प्रेम, सहिष्णुता, इन सब पे डिपेंडेंट है, क्षमा, मानवीयता, सहानुभूति। तो राजा हरिश्चंद्र खुद अपने बेटे की उसको शव को चिता की अनुमति नहीं देते हैं, ओनली टू शो कि न्याय के सामने सभी बराबर हैं। तो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये रही है हमारी परंपरा, और हमको कुल मिलाकर के इसलिए कोशिश होनी चाहिए, कितना ज़्यादा हम भारतीयकरण कर सकते हैं अपने कानूनों का उतना ज़्यादा किया जाए। अभी जो 3 नए क्रिमिनल लॉ बने हैं, हम सबको पता है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, बाकी दोनों जो तीनों नए जो लॉ बने हैं वो एक बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। कम से कम एक मैसेज ही है, यही मान लीजिए आप कि एक 100 करोड़ से ज्यादा का देश अभी भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों पे चल रहा है। ऐसा क्यों? क्या हमें कानून बनाने की क्षमता नहीं है? इसलिए जरूरी था कि हम 1861 के कानूनों से क्यों गवर्न हों। तो ये एक बहुत बड़ी जो है आवश्यकता थी जो हमारे नए कानून ने पूरी की है। और उसके सेंटर में देखिए, भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता पे जब आ गए, ये भी बहुत बड़ा मैसेज है। क्या मैसेज है? कि पुराना कानून दंड पर आधारित था। कोई पानी मेरे को देंगे? पानी, थैंक यू। पुरानी जो आईपीसी थी उसके सेंटर में दंड है। बिकॉज क्यों है दंड? अंग्रेजों को लगान वसूलना है, अंग्रेजों को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को क्रश करना है, ठीक है। तो इसके लिए उसके पूरे कानून के सेंटर में ही दंड है। अब हम कहना चाह रहे हैं सेंटर में न्याय होगा, दंड नहीं, न्याय। न्याय में दंड देना पड़ेगा, दंड भी दिया जाएगा, मृत्यु दंड देना पड़ेगा, वो भी दिया जाएगा, पर न्याय होगा। तो वो एक मैसेज है, नाम बदलने से मैसेज भी आ रहा है बड़ा सा। तो जितनी भी कॉलोनियल माइंडसेट को जो चेंज करने की ज़रूरत थी, जो हमारी गुलाम मानसिकता को बदलने की ज़रूरत थी, आई एम श्योर उसकी तरफ ये जो नए कानून आए हैं, ये एक बड़ा जो है चेंज आएगा इससे। और इसने बहुत सारी चीज़ें डाली भी हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विस डालना। ये तो पहले कॉन्सेप्ट नहीं था कहीं उसमें, अपनी पुरानी आईपीसी में, आईपीसी सीआरपीसी में। तो कम्युनिटी सर्विस कहीं ना कहीं हमारी जो न्याय पंचायत, जो हमारी न्याय प्रणाली थी, न्याय जो पंचायत बेस्ड थी, जहाँ पे निपटारे पे जोर था, जो भारतीय न्याय पद्धति है ना, अब उसमें 3S बच्चे अगर याद रखें, सरल, सस्ती और शीघ्र। मैं जस्टिस महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा, सभी जानते हैं ये तीनों ही एस मिसिंग है आज की तारीख में। न सरल है हमारी न्याय प्रक्रिया, न सस्ती है, और न ही वो शीघ्र वाली है, त्वरित है। तो ये तीनों जो बातें हैं, नए नए कानून ने इस बात को समझा है और ये बोला है कि जस्टिस टाइम बाउंड होगा, इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड होगी, ट्रायल टाइम बाउंड होगी, जजमेंट टाइम बाउंड होगा। तो एटलीस्ट उसकी पहचान है, कितना इंप्लीमेंट होगा वो समय बताएगा। बट जैसा जो मैंने कहा कि जो हमारे मूल में था, सरल, सस्ता और शीघ्र, वो एटलीस्ट हम कॉन्सेप्ट में तो रखें। जो हमारी पंचायत बेस था, गांव के गांव में सब डिसाइड हो जाता था। कोई प्रॉब्लम आ रही है, बैठ लो भाई, 10 लोग बैठ के डिसाइड कर दो, निपटारा होगा। दंड देना दंड दे दो, गांव से बाहर कर दो, ठीक है, कम्युनिटी से बाहर कर दो। दंड भी देते थे, बड़े दंड भी देते थे। तो अब आपकी आज की हालत देखिए, गांव गांव में मुकदमेबाजी है। तो इस सब से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। मैं एक नया आइडिया, बड़ा आइडिया और देते हुए जो है मैं अगले बात को मैं क्लोज करूंगा कि एक कानून है जिसको मैंने देखा है थ्रू आउट 35 साल अपनी पुलिस की सर्विस में, अपना मैरिज का लॉ। हमारे कानून के हिसाब से 18 साल पे लड़की और 21 साल पे लड़का जो है उसकी शादी कर सकते हैं। पर क्या वो 18 और 21 में मैच्योर है? 18 साल में क्या लड़की डिसाइड कर सकती है उसे किससे मैरिज करनी है? क्या उसके हित में होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिजिकली मैच्योर हो गई है,
शी कैन चूज वेदर शी वांट सेक्स और नॉट, पर क्या वो डिसाइड कर सकती? मैरिज ऐसा बड़ा डिसीजन, उससे कैरियर का डिसीजन तो होता नहीं है 18 साल की एज में। मैं ब्रिलियंट था मैथमेटिकली, मुझे लोगों ने मैथमेटिक्स में धकेल दिया, यानी इंजीनियरिंग। आई केम टू IIT दिल्ली। तीसरे साल में जाके मुझे पता चला यार इंजीनियरिंग तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तब मैंने चेंज किया अपना डायरेक्शन और सिविल सर्विस में। तो 18 साल की बच्ची शादी के निर्णय कैसे ले सकती है? पूरी भारतीय सिस्टम को इसने ध्वस्त कर दिया। भाई अंग्रेजों में, यूरोप में, अमेरिका में 18 साल में बच्चे अलग रहने लगते हैं पेरेंट्स से, उनकी चॉइस है, कभी कभी आते हैं। यहाँ तो हमारा पूरा फैमिली सिस्टम जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ शादी कहीं ना कहीं दो फैमिलीज का भी बॉन्ड है, वो खाली लड़के लड़के की शादी नहीं हो रही है। तो उसको हमने इस कानून से तोड़ दिया। जब मर्जी अचानक घर से लड़के गायब, भाग गई, और उसको हम प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो भाई 25 साल से पहले, मेरा मतलब सोच है कि भारतीयकरण तब होगा 25 साल में गृहस्थ आश्रम हमारे सिस्टम में लिखा हुआ था। तब तक पेरेंट्स की अनुमति के बिना शादी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पूरे सिस्टम को हम तबाह कर रहे हैं। क्योंकि उससे मैंने देखा है, घर टूटते हुए देखा, लड़ाइयां होते देखा, मर्डर्स होते देखा। क्यों? क्योंकि हमने एक बाहर का कानून यहाँ पे थोप दिया, हमारी इथोस में कहीं था ही नहीं वो। चलो आज की तारीख में आप थोड़ा फ्रीडम भी दे देंगे तो पेरेंट्स को रूल आउट कर देंगे। 18 साल तक बच्चे को पाला, अचानक एक दिन कहते हैं यू आर नोबडी फॉर मी। एनीवे, ये मैंने एक अपना एक विचार रखा। मे भी इस पे दिन में चर्चा कोई ना कोई, आप लोगों में से इतने सारे महानुभाव आए, इतने सारे विद्वान आए यहाँ पे, तो जरूर चर्चा करेंगे। मैं पुनः आभार व्यक्त करूँगा मैडम मेहता का हमारे बीच में आने के लिए, और हमारे और सभी मुकेश गर्ग सर का, बाकी सभी डिग्नेटरीज का जो आप लोग आए और हमें गौरवान्वित किया। हमारी यूनिवर्सिटी के जो है के लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू। Gracing us with your illuminating address and profound worldview. Your presence here today epitomizes the essence of scholarly excellence and collaborative exploration. As we continue to shape the contours of today's imperative themes, it is now time to invite a distinguished academician whose leadership in legal education stands as a model of institutional clarity and purpose. With great pleasure and a deep sense of admiration, I now request our eminent special guest, Professor Dr. Amarpal Singh Ji, Honorable Vice Chancellor at Dr. Ram Manohar Lohia, National Law University, Uttar Pradesh, to kindly grace the stage and lend us his scholarly insights. Honorable Madam Justice Meenakshi Mehta ji, Shri Mukesh Garg ji, Member Haryana Electricity Regulatory Commission, Shri Ashok Kumar ji, the Honorable Vice Chancellor of Dr. Ambedkar National University, Sonipat, Professor Ahuja ji, the Honorable Director of ILI, Dr. Rajiv Mani ji, Secretary Ministry of Law, Professor Ashutosh Mishra ji, my very senior distinguished colleague sitting in front of the dais, friends, student friends. Indianization of legal system. Shri Ashok ji has already highlighted the importance of the subject, and the subject has been attracting the attention of the whole system because of the malfunctioning or inefficient in functioning of the existing model. Don't have to explain it because this is every law student's common knowledge that the existing system has not been able to deliver the justice, and the monumental evidence is the pendency issues. 5 crore cases pending already in the court, so and so forth. Don't have to explain that subject.
Organizing a conference like this, a brainstorming like this, requires a lot of understanding and courage. This is my distinguished privilege to be part of this brainstorming in which experts from all over the country are participating. I take this opportunity to put on record my sincere gratitude and thanks to Honorable Vice Chancellor of this university and Professor Ashutosh Mishra ji and his team, of course, who had taken care to organize the whole thing, starting from the brainstorming to ensuring that everybody, gets the taxis and conveyance and everything in place. The kind of organization that it is itself is a huge effort for which the organizers deserve congratulations and accolades. Friends, I shall start with a small submission. And the submission is that articulating and raising questions to what we are doing, have been doing, is as much important as answering those questions, because these questions basically provide us the clues as to where we need to really move on, how to correct, modify our methodology, our logistics, and so on and so forth. Therefore, I'm not answering questions, but trying to articulate a few questions which might help us in appreciating the subject in a better manner. The first question that I have in my mind is, when we talk about Indianization, what is it that I'm calling Indian? Is it that the constitution that we have is not Indian? Is it that the Supreme Court that we have is not an Indian thing? That we are talking in terms of restructuring, replacing? What exactly this idea of Indianism is? That is one question. Second question that I have in my mind is that when we talk about a better model of law and order or justice dispensation system, if I put it that way, which model we are referring to? Because Indian judicial system, I'm not sure what do we call it, because there was nothing like judicial system the way we understand today. It was a very different kind of a system altogether, which needs to be explored and understood properly. But when we talk about Indian model of justice dispensation, please appreciate and understand that this is not something which is one single institutional entity that we are referring to. It is spread over centuries and millennia, and variety of models experimented over several hundreds and thousands of years. Pre-Vedic period to Vedic period to Mahabharata to Ramayana Kal to Mahajanpad Kal to Gupta period to post-Gupta period to Mughal to modern period, which model we are referring to? Just refer by way of an example, Mahajanpad Kal, and Professor Kashi Prasad Jaiswal has done a lot of work on the subject. At that point of time, the justice dispensation was concentrated in the community model, which somehow persisted in our panchayat system, as Manya Ashokji was referring to. So that was a model in which the responsibility of providing justice rested with the head of that community or guild. Say for example, business community or business guild in a certain area would have the responsibility of ensuring that if anything goes wrong, a wrong is committed in the modern sense of the term, then the remedy is provided therefore. That was the kind of a model we have. So
This is the second question that we need to appreciate and understand as to which model we are referring to when we talk about India and Indian. Third important question that I have in my mind is that when we talk about Bharatiya Nyaya Shastra, the expression Nyaya in Indian ethos, somehow in modern context we compare it with justice. But the way we understand justice today, actually Indian Nyaya is not that justice. The Indian Nyaya Shastra, as we understand it, is actually a system of logic. In fact, may or may not be appreciated, but the truth is that the way we understand justice in modern context, this idea of justice was not part of Indian system at all. Probably we had never thought about it. Why we never thought about this kind of a justice as we appreciate and understand it? And please understand it, that in the Indian Constitution, the preamble itself, justice and equality are organizing principles of the Constitution. They are not simply ideals or just another concept in the system. They are organizing ideals of the organizing elements of the Indian Constitution. Now, just attempting an answer in a minute or so as to why this, why the Indian system could not conceptualize, could not conceive the idea of justice that we think it is today. To my understanding, Indian mind was actually hooked to the idea of Atma and Paramatma and some kind of a harmonization at a very higher level, which was obviously draped in the idea of Maya. And in this actually emerged the idea of benevolent kingship, Republican experiences we had, of course, environmental sustainability, and the idea of Vasudhaiva Kutumbakam, as we generally call it. Kathopanishads, and everybody knows about that. Ayam nejaha paroviti gadana lagu chetasam, udara charita nantu Vasudhaiva Kutumbakam, etc., etc. Now, in the modern context, when the idea of justice gets embedded in the Indian model, that the model of justice dispensation that we have today, please understand and appreciate it that the emphasis has been put on the idea of justice in the preamble, but the whole emphasis in the operational model has shifted to law, not justice. And therefore, at the drop of the hat, anything happens, the first demand is make a law on the subject, as if making a law would solve the problem. So understand this shift from justice to law, how that has happened. Now, in this background, when we talk about Indianization of legal system, my appreciation is, in a very, humble submission, that this certainly does not refer to the restructuring of the system. What exactly probably we are trying to do is that we are trying to cull out the values that have been nurtured over thousands of years in Indian model and try to infuse those values in the existing model so that we can better operate this system. That is probably the attempt. And therefore, the answer probably lies in an attempt to really cull out those principles from the time-tested literature that we have, maybe Vedic literature and several other things that we have, and scholars will have to really ponder over these issues. I also have my own understanding of which I am not obviously referring to.